O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in any every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden hidden light, light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O O hidden love, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he know is he is also one. also one with every other. Om Shanti Shanti. Om Shanti. આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Thank you so much. दिनाकरण जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा. सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं और जो जितनी किताबों के बारे में वो लोगों को बताते हैं, शायद मैं सोचता हूँ पूरे भारतवर्ष में उनसे ज्यादा कोई सक्रिय नहीं है. ही इज वेरी एक्टिव इन दैट. 1983 में उन्होंने अडियार लॉज के मेंबर की तरह थियोसॉफी ज्वाइन की. वो सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट हैं. केरला फेडरेशन के सेक्रेटरी रहे 89 से 92 तक. 2010, 2013 और 2016 ऑनवर्ड्स तक उन्होंने नेशनल लेक्चरर के रूप में इंडियन सेक्शन को भी अपनी सेवाएं दी. केरला साहित्य अकेडमी में एक उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है ब्रह्म विद्या संगम. ये मतलब जो एक तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी और को केरला में किस तरह से पुनर्जागरण हुआ उसके बारे में ये किताब बताती है. और उन्होंने राधा बर्नियर की जो टॉक्स हैं उसको भी उन्होंने कंपाइल्ड किया है लिसन टू द सॉन्ग ऑफ लाइफ में. वे सुरेंद्र नारायण टॉक्स को भी उन्होंने कंपाइल किया है, लीव योर वर्ल्ड एंड कम इनटू आवर्स. उसके अलावा उन्होंने थियोसॉफिक लाइफ को ट्रांसलेट किया है डॉक्टर एनी बेसेंट की आर्टिकल्स में किया है. अर्षा जी म्यूट कीजिए. किया है और बहुत सारे थियोसॉफिकल ऑर्डर्स को दिया है. तो इस तरह से जो हमारे वक्ता हैं वो बहुत ही सक्रिय हैं और साथ ही उन्होंने संस्कृत वगैरह में भी काफी काम किया है और लाइफ मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी के. तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज का विषय प्रारंभ करें जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग है. 5 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है. हम लोग सब आज मना रहे हैं. सभी को बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. Am I audible, sir? Yes, sir. Loud and clear. Yes. Thank you, brother Munshi ji and the team behind the Trivedi meet. Brother, I can see Brother Hariyar Raghavan, or one of the senior members from Adayar. So, first of all, I thank every one of you for giving me an opportunity to talk on this auspicious day, Buddha Poornima. Vaisak Poornima is actually on 5th of May. Vaisak Poornima is a thrice blessed day for the Buddhist world and also for Theosophists. On this auspicious day, Buddha was born as Prince Siddhartha of Sakya clan. He got enlightenment on this day, and he also left his body on this day. A beautiful description of the Vaisak Poornima is given by Bishop Leadbeater in the book, The Masters in the Path, which many of you may have read. C.W. Leadbeater states that on this auspicious occasion, Lord Buddha shows himself in the presence of a crowd of pilgrims. Many people give their testimony that they themselves were present on that ceremony and felt the immense presence of Buddha, the enlightened. Buddha blesses the people present on that occasion, and his closest disciples chant the Maha Mangala Sukta, which contains his teachings. Lord Maitreya takes so prominent a part in this ceremony. The members of the brotherhood come up to the Lord Maitreya in the order of their admission, and each sips the magnetized water sanctified by the holy presence of Lord Buddha. Every year this ceremony is repeated, and those who wish to make an astral travel can do it as suggested by C.W. Leadbeater. This year Purnima is on 5th May, 11:04 p.m. Indian Standard Time. Of all the existing philosophies, says H.V. Blavatsky in The Secret Doctrine,
Buddhism is the least understood, probably because some of the truths taught by the Buddha were too deep for the ordinary understanding. They have been rejected by the orthodox among the Hindus in India and misunderstood by many of those other lands who profess to accept them. The teachings of Buddha, which he himself described as plain, sweet, and logical, saral, madhur, or tarkic, are not really meant for the particular section which calls it Buddhist, but are of value to all. They are more needed in the world today than they ever were before. From the theosophical and occult point of view, there can be no opposition ever between teachings that come from one great spiritual messenger and what is taught and proclaimed by another, since they all belong to the same grand company, the occult brotherhood of the elect and the noble. I quoted from Brother N. Sriram, former president of the Theosophical Society. Buddha taught on Dharma, religious life. The opening verse of Dhammapada says, Dhamma has mind as forerunner, becomes noble through mind, is mind itself. If one speaks or acts with an evil mind, thereby suffering follows him, as the wheel of a cart, the foot of the horse drawing it. Dharma has mind as a forerunner, becomes noble through mind, is mind itself. If one speaks or acts with a pure mind, thereby happiness follows him as shadow never deserts. Buddha is the teacher of nirvana and the law. Buddha spoke to the people in Pali and not in the scholar's language, Sanskrit. He used similes most easily understandable to the common man as cited above: the horse, wheel of the cart, the shadow which never leaves, etc. Buddha always insisted on self-inquiry. His own life was a shining example of such inquiry. Leaving the luxuries of life, dear ones, and a search into the cause of human misery and sorrow. It was not a negation of life and the realities of the world, but deeply pondering on fundamental issues. If necessary, he was ready to learn from the ordinary people. As described in the poem, Agarwal's Light of Asia, while Buddha was meditating under a tree, doing great penance, a few Devadasis, Nach girls, were passing by that and he happened to overhear their talk. The poem goes like this: fair goes the dancing when the sitar is tuned. Tune as the sitar neither low nor high, and we will dance away the hearts of men. The string overstretched breaks and the music flies. The string over slack is dumb and music dies. Tune as the sitar, neither low nor high. Buddha reflected on these words and said, the foolish half times teach the wise. I strained too much the string of life, belike. Then he decided to follow the middle path, which means keeping away from the luxuries and pleasures of life, and also at the same time avoiding extreme measures such as torturing the body by starvation, etc. Middle path is suitable to every person, whether he is a child or a woman, rich or poor. Buddha's another advice to his disciples is very famous, known as Kalama Sutta, which is included at the feet of the master. We can find the spirit of inquiry in it. It goes like this: therefore, you must not hold a thought just because many other people think it, or because it has been believed for centuries, not because it is written in some book which men think sacred. You must think of the matter for yourself and judge yourself whether it is reasonable. There is no teaching in Buddhism which is not reasonable. Tanha or Trishna, craving for life, is the cause of sorrow, Buddha said. Through the four noble truths, Arya Satyas, he explained the sorrow or suffering, the cause of sorrow, the ceasing of sorrow, the way which leads to escape from sorrow. The first truth is
an assertion that all manifested life is sorrow, unless man knows how to live it. Bodhisattva said that there are two senses in which manifested life is sorrowful. These words are from Bishop Leadbeater. One of these is some extent inevitable, but the other is an entire mistake and is very easily to be avoided. To the monad, all manifested life is one sense sorrow, because it is limitation, a limitation which we in our physical brain cannot in the least conceive, because we have no idea of the glorious freedom of the higher life. We are only a fragment of the fragment. We are nevertheless a part of a magnificent reality. Therefore, we are part of the higher. We can eventually rise into the higher and become one with it. That is the end and the aim of our evolution. Another sense in which life is sorrow, but that can be entirely avoided. The man who is full of lower desires are always in sorrow. His desires need not be wicked, but desires of lower things, and these desires is tied down and confined. He is constantly striving to attain something which he has not, and he is full of anxiety as to whether he will attain it. And when he has attained, he is anxious lest he should lose it. Money, power, position, material comforts all come under this craving. Even affection or attachment to some dear ones, and the fear of losing it also worries us. Lack of recognition by others also make us unhappy. What is cause of sorrow? Cause of sorrow is desire. Death, though an inevitable reality of life, shook many people. Death of wife, children, parents, old age and disease, physical weaknesses, all these are the causes of sorrow. Nobody can escape from this reality. The only way is to forget self, or smaller self, to let all selfish desires cease, and to turn the thought onward to the helping of others as one's capabilities go. Third is ceasing of sorrow. We have to live in this world which is a hall of sorrow. But we have to live in this world without any attachments which will bind us. We are in it, but we must not be of it. For many, this is quite unimaginable, but Buddha prescribed it because it is practical to all of us. We can all reach it, and we ought to do so, because only when we have attained it can we really and effectively help our brother men. Buddha proclaimed to the world the third noble truth, which is relevant in the present world. Each man, without the help of priest or scripture, can by his own efforts put an end to the craving which causes misery. This salient feature of Buddhist philosophy is included in the Order of the Mystic Star ceremony gifted to the world by Brother C. Jin Rajadasa, our fourth international president. The way which leads to the escape from sorrow. Scientifically analyzing the sorrow, its cause, its cessation, Buddha next points out the way which leads to the escape from sorrow. Many people, Buddhism is a scientific religion because of this approach. This way prescribed by Buddha is now known to all of us as the Noble Eightfold Path, or Arya Ashtanga Margam. First one is right belief. In the following 8 steps or stages, Buddha adds the word samyak, or translated as right. We must understand that what we consider in this life as worthful is not samyak. We consider all sorts of infatuations as love. This is also true with belief also. It is not blind belief of something as true. The law of cause and effect, the law of karma, is a fact in nature, whether we accept it or not. But for a person rightly understands it and believes in it, life is quite different. He accepts his ups and downs, failures and shortfalls, all as equal. God's plan is evolution. Through the experiences of life, we are progressing on this path. We must clearly understand that eternal justice rules the world. Doubt is considered as one of the impediments in the path of initiation to the higher mysteries. Lord Krishna in Bhagavad Gita said, the doubtful one perishes. Right thought. A person who guards his thought is a real sentient.
Much of our thoughts are useless and untrue. Philosophers like J. Krishnamurti pointed out this truth, saying that thought is always limited. Due to the wrong influence of thought, we are not even able to see a tree or a bird. Human nature is to bring thought into the present and name it, shelf it, or analyze it with the bundle of memories and reach into certain conclusions. This is a great obstacle created by thought. The virtue meditation, observation of the breathings, these are all techniques to stop unnecessary wandering of the mind, because mind cannot hold two thoughts at a time. Its tendency is to jump from one branch to another branch like a restless monkey. Our thought about others must be true. We must ensure that all our thoughts are kind and good. Right speech. Our speech is only a reflection of what we think. The litmus test of a speech is that it should be true, kind, and helpful. Idle words are also a mischievous word. Innocent idle words are waste of time. Then right action. No doubt, if our thoughts are pure, naturally our speech will be perfect. It will be followed by right action. We should always remember that our thought, our speech, and our actions are not merely qualities but powers. Power is given to us to use, for the use of which we are directly responsible. All are meant to be used for lokahita or welfare of the world. Right livelihood. In this world, we cannot live without livelihood. We have to support our family. This does not mean that to earn money, we can do any business or job, business or career which will harm the health and welfare of society. We should avoid. Drugs, tobacco, alcohol are harmful to the society, directly or indirectly. We should free ourselves from such things and also avoid products of cruelty from day-to-day life. Then sixth is right exertion or right behavior, right endeavor. It is not enough that we may keep ourselves away from the evil, but we must do good also. It is not enough to be passively good. Every one of us have some power, not only physical but mental. Every day we must use it for helping the world. We who know the power of thought must daily use it. We must have the quality of discrimination to do the right thing without wasting any time. Right memory or right remembrance. We delete all the unwanted files or pictures stored in our electronic devices. Like that, we should delete all the unnecessary memories of hurt, wound, and insults from our mental software. In our personal relationship also, we can keep good memories and delete all the unwanted memories. We are easily influenced by flattery and insult, which never helps us to improve. 81 is the right meditation or right concentration. In our daily life, we practice meditation for a few minutes. Would be a perpetual meditation and not confined to a part of the day. The above teachings were given for the first time by Buddha during the Buddha Poornima, which usually come in the month of July. Non-violence, compassion, and the true spirit of inquiry are the hallmarks of Buddhism. He never asked anyone to blindly follow him, but asked to examine his words in the light of reason and common sense. The founders of the Theosophical Society, H.P. Blavatsky and H.S. Olcott, took the Panchashila and embraced Buddhism. Our fourth presidency, Jinrajadasa and C.W. Leadbeater, were followers of Buddha Dharma. The valuable contribution of our founders for Buddhism will be dealt in the part 2 of the talk. Thank you. Sir, you're muted. राइट ऑन टाइम एंड नंदकुमार जी, यस, आपने अपना स्पॉटलाइट खोल दिया है। नंदकुमार जी का स्वागत है और मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। नंदकुमार राउत जी ने बीई किया हुआ है सिविल फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे,
रिटायर्ड हो गए सर्विस से 2015 में। पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वे जुड़े हुए थे अकोला में, और उन्होंने मतलब अलार्म बज गया, तो उन्होंने टीएस में ज्वाइन हुए वो लगभग 2015 में, 1 दिसंबर 1997 में, और अकोला लॉज में भी वो 2008 से 2016 तक ट्रेजरर रहे। प्रेसिडेंट रहे अकोला लॉज के 2016 से 2019 तक, और मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी वो प्रेसिडेंट रहे 2016 से 2019 तक। नेशनल लेक्चरर तो है ही इंडियन सेक्शन वाराणसी के, और सारे विषयों पर इनका बड़ा ही अच्छा प्रभुत्व है। यस नंद कुमार जी, टेक योर टाइम, आपका समय शुरू होता है। थैंक यू। थैंक यू दिनकरन जी, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया। सगळ्यांना नमस्कार। आज मी दिनकरन सरांनी जे इंग्लिश मध्ये जे स्पीच दिलं वैशाखी पौर्णिमेवर, तर त्याचंच मी ट्रान्सलेशन आज आपल्या समोर प्रस्तुत करतो। वैशाख पौर्णिमा हा बौद्ध जगतासाठी आणि थिओसॉफिस्ट साठी 3 वेळा हा पवित्र दिवस आहे, आणि या शुभ दिवशी बुद्धांचा जन्म शाक्य कुळातील राजकुमार सिद्धार्थ म्हणून झाला होता। तसेच या दिवशी त्यांना साक्षात्कार होऊन ज्ञान प्राप्ती याच दिवशी झाली, आणि तसेच वैशाखी पौर्णिमेला त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले, म्हणजे त्यांनी आपल्या नश्वर देहाचा त्याग केला। वैशाख सणाचे सुंदर वर्णन CW लेडबीटर यांनी दी मास्टर्स अँड द पाथ या पुस्तकात दिले आहे, जे तुमच्यापैकी अनेकांनी वाचले असेलच। CW लेडबीटर सांगतात की या शुभ प्रसंगी भगवान बुद्ध यात्रेकरूंच्या गर्दीच्या उपस्थितीत स्वतःला प्रकट करतात, स्वतःला दर्शवतात, आणि पुष्कळ लोक त्यांची साक्ष देतात की ते स्वतः त्या समारंभाला उपस्थित होते, आणि त्यांना ज्ञानी बुद्धांची प्रचंड दैदिप्यमान उपस्थिती जाणवली। बुद्ध त्या प्रसंगी उपस्थित लोकांना आशीर्वाद देतात, आणि त्यांचे सर्वात जवळचे शिष्य त्यांच्या शिकवणीचा समावेश असलेल्या महामंगला सूक्तांचा जप करतात। भगवान मैत्रेय या सोहळ्यात प्रमुख भाग घेतात। ब्रदरहुडचे सदस्य त्यांच्या प्रवेशाच्या क्रमाने भगवान मैत्रेय यांच्याकडे येतात, आणि प्रत्येक जण बुद्धाच्या पवित्र उपस्थितीने पवित्र केलेले चुंबकीय पाणी पितात। दरवर्षी या सोहळ्याची पुनरावृत्ती होते, आणि ज्यांना सूक्ष्म प्रवास करावायचा आहे व जे सक्षम आहेत ते CW लेडबीटर यांनी सुचवल्याप्रमाणे प्रवास करू शकतात। यावर्षी वैशाखी पौर्णिमा 5 मे रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री 11:04 मॅडम ब्लॅवट्स्की म्हणतात, सर्व विद्यमान तत्वज्ञानांपैकी बौद्ध धर्म सर्वात कमी समजला जातो, कदाचित कारण बुद्धांनी शिकवलेली काही सत्ये सामान्य लोकांना समजण्यास खूप गहन होती। त्यांना भारतातील हिंदू मधील सनातनी लोकांनी नाकारले आहे, आणि त्यांना स्वीकारण्याचा दावा करणाऱ्या इतर अनेक देशांनी त्यांचा गैरसमजही केला। बुद्धांनी मध्यम मार्ग अवलंब करण्याचा उपदेश केला, आणि त्यांनी स्वतः तो निर्णय घेतला, म्हणजे जीवनातील आनंद व सुख सोयीपासून दूर राहणे, आणि त्याच वेळी उपासमारीने शरीराला त्रास देणे, ह्या अशा प्रकारच्या त्रासदायक गोष्टी अत्यंत हे जे उपाय आहेत हे टाळणे, ह्या गोष्टींचा त्यांनी उपदेश केला। मध्यम मार्ग प्रत्येक व्यक्तीसाठी योग्य आहे, मग तो लहान मुलगा असो किंवा एक स्त्री असो, श्रीमंत असो किंवा गरीब असो।
बुद्ध म्हणाले की तृष्णा ही जीवनाची लालसा आहे आणि हेच दुःखाचे कारण आहे. त्यांनी पुढील 4 उदात्त सत्यांद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की पहिले आहे दुःख किंवा भोग, दुसरे आहे दुःखाचे कारण, तिसरे आहे दुःखाचा अंत आणि चौथा आहे दुःखापासून सुटका करण्याचा मार्ग. पहिला असा आहे की वासनांनी भरलेला माणूस नेहमी दुःखात असतो. त्याच्या वासना दुष्ट नसून निम्न गोष्टींची इच्छा त्यामध्ये असते आणि या इच्छा त्याला बांधून बंदिस्त करतात, ठेवतात. त्यामुळे तो मुक्त राहू शकत नाही. दुसरा आहे दुःखाचे कारण. दुःखाच्या कारणाबद्दल बुद्ध म्हणतात म्हणजे इच्छा, मृत्यू हे जीवनाचे अपरिहार्य वास्तव असूनही अनेकांना हादरवून सोडते. पत्नी, मुले, आई वडील यांचा मृत्यू, म्हातारपण, रोग, शारीरिक दुर्बलता ही सर्व दुःखाची कारणे आहेत. या वास्तवापासून कोणीही सुटू शकत नाही. एक मात्र मार्ग म्हणजे स्वतःला विसरणे, सर्व स्वार्थी इच्छा थांबवणे आणि स्वतःच्या क्षमतेनुसार इतरांच्या मदतीकडे आपला विचार वळवणे. तिसरा उपाय त्यांनी सांगितला दुःखाचा अंत. दुःखाचे दालन असलेल्या या जगात आपल्याला जगायचे आहे, परंतु आपल्याला या जगात कोणत्याही आसक्ती शिवाय जगायचे आहे की ज्या आसक्ती आपल्याला बंधनात टाकतात. आपण त्यात आहोत पण आपण त्याची असू नये, हे महत्वाचे आहे की आपण या जगामध्ये राहायचं परंतु त्या जगाचं व्हायचं नाही, हे महत्वाचं. प्रत्येक मनुष्य पुरोहित किंवा धर्मग्रंथाच्या मदतीशिवाय स्वतःच्या प्रयत्नांनी दुःखाला कारणीभूत असणारी तृष्णा संपवू शकतो. चौथा आहे दुःखांपासून सुटका करण्याचा मार्ग. दुःखाचे शास्त्रीय दृष्ट्या विश्लेषण करून त्यांचे कारण, त्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी बुद्ध पुढे दुःखापासून सुटका होण्याचा मार्ग दाखवतात. या दृष्टिकोनामुळे बरेच लोक बौद्ध धर्माला वैज्ञानिक धर्म मानतात. बुद्धांनी सांगितलेला हा मार्ग आता आपल्या सर्वांनाही द नोबल 8 फोल्ड पाथ किंवा आर्यमष्टांग मार्ग म्हणून ओळखला जातो आणि त्याचे जे एलिमेंट्स आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत. पहिला आहे योग्य विश्वास. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की या जीवनात आपण ज्याला पूर्ण मानतो, पूर्ण मूल्य मानतो ते सम्यक नाही. आपण सर्व प्रकारच्या मोहांना प्रेम समजतो. एखाद्या गोष्टीला सत्य मानणे हा आंधळा विश्वास नाही, कारण आणि परिणामाचा नियम आहे. म्हणजे कॉज अँड इफेक्ट याचा तो परिणाम आहे, कर्माचा नियम आहे आणि ही निसर्गातील वस्तुस्थिती आहे आणि आम्ही ते स्वीकारू किंवा न स्वीकारू. पुढे ते असे म्हणतात की उच्च गूढतेकडे जाण्याच्या मार्गातही संशय हा एक देखील अडथळा मानला जातो. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात संदिग्धाचा नाश होतो. पुढचा आहे एलिमेंट योग्य विचार. आपले बरेचसे विचार निरुपयोगी आणि असत्य आहेत. जे कृष्णमूर्ती सारख्या तत्ववेत्यांनी हे सत्य निदर्शनास आणून दिले की विचार नेहमीच मर्यादित असतो. विचारांच्या चुकीच्या प्रभावामुळे आपण झाड किंवा पक्षी देखील संपूर्णपणे, समग्रपणे पाहू शकत नाही. तिसरा आहे योग्य भाषण. आपले बोलणे म्हणजे आपण काय विचार करतो याचे प्रतिबिंब असते. भाषणाची चाचणी जर करायची असेल म्हणजे ते खरे, दयाळू आणि उपयुक्त असले पाहिजे. आणि निष्क्रिय शब्द देखील एक खोडकर शब्द आहे. निष्क्रिय शब्द देखील एक खोडकर शब्द आहे आणि निष्क्रिय शब्द वेळेचा अपव्यय पण आहे. चौथा आहे 8 फोल्ड पाथ मध्ये योग्य कृती.
आपले विचार शुद्ध असतील तर स्वाभाविकपणे आपले बोलणे परिपूर्ण असेल आणि त्यानंतर योग्य कृती होईल यात शंका नाही. आपण हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की आपले विचार, आपले बोलणे आणि आपली कृती हे केवळ गुण नसून ही शक्ती आहे आणि त्याचा वापर सर्व लोकहितासाठी आणि जगाच्या कल्याणासाठी करावा. 5वा पाठ आहे योग्य उपजीविका. या जगात आपण उपजीविकेशिवाय जगू शकत नाही. आपल्याला आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. याचा अर्थ असा नाही की पैसे मिळवण्यासाठी आपण कोणताही व्यवसाय किंवा नोकरी करू शकतो. आपण समाजाच्या आरोग्याला आणि कल्याणाला हानी पोहोचवणारा व्यवसाय किंवा करिअर आपण टाळले पाहिजे. अंमली पदार्थ, तंबाखू, दारू हे समाजासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे घातक आहे. आपण अशा गोष्टींपासून स्वतःलाही मुक्त केले पाहिजे आणि दैनंदिन जीवनातील क्रूरतेचे उत्पादन देखील टाळले पाहिजे. 6वा पाठ आहे योग्य परिश्रम आणि योग्य प्रयत्न. आपण वाईटापासून दूर राहणे पुरेसे नाही तर आपण चांगलेही केले पाहिजे. निष्क्रियपणे चांगले असणे पुरेसच नाही. निष्क्रियता आहे पण चांगलं आहे तर तेही पुरेसे नाही. 7वा पाठ आहे योग्य मेमरी आणि योग्य स्मरण. आपण आपल्या मानसिक विश्वात निर्माण झालेली दुखापत आणि इच्छा आणि अपमानाच्या सर्व अनावश्यक आठवणी हटवल्या पाहिजे. आपल्या वैयक्तिक नात्यातही आपण चांगल्या आठवणी ठेवू शकतो आणि सर्व नको असलेल्या आठवणी हटवू शकतो. 8वा आहे योग्य ध्यान किंवा योग्य एकाग्रता. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण काही मिनिटे किंवा अर्धा तास ध्यानाचा सराव करतो. जर आपण दिवसभर अशी ध्यानधारणा ठेवू शकलो तर त्याचा उपयोग होईल. आपले जीवन एक चिरस्थायी ध्यान असेल आणि दिवसाच्या एका भागापुरते मर्यादित नसेल. वरील शिकवणी बुद्धांनी प्रथमच आषाढ पौर्णिमेच्या वेळी दिली होती आणि जी आषाढ पौर्णिमा सहसा जुलै महिन्यात येते. थिओसॉफिकल सोसायटीचे संस्थापक मॅडम ब्लॅवट्स्की आणि कर्नल ऑलकॉट यांनी पंचशिला घेतली आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला. थिओसॉफिकल सोसायटीचे चौथे प्रेसिडेंट सी जिनराज दास आणि CW लेडबीटर यांनी देखील बुद्ध धर्माचे अनुयायी होते. बौद्ध धर्मासाठी आमच्या संस्थापकांचे अमूल्य योगदान म्हणजे थिओसॉफिकल सोसायटीच्या नेत्यांनी, पुढाऱ्यांनी जे अमूल्य योगदान केले ते आपण भाग 2 मध्ये बघू. आपण तुर्तास आपण भाग 1 हा संपवतो आहे. नमस्कार. नमस्कार राउत साहब, एकदम राइट टाइम खत्म हो गया और स्मिता जी आप भी अपना समय ले सकती हैं. स्मिता जी का छोटा सा परिचय देना चाहूंगा कि वे MA हिस्ट्री में है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया उन्होंने पर्सनल मैनेजमेंट में. स्मिता चौधरी जी वर्तमान में मेंबर तो हैं सिद्धार्थ लॉज भुवनेश्वर की, लेकिन चूंकि वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में HR मैनेजर हैं, वो दिल्ली में रहती हैं, आज दिल्ली से जुड़ी हैं और उनका मोटो यही है कि जिंदगी में नई नई चीजें सीखना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है थियोसॉफी की, फिलोसॉफी की, और उनका पैशन जो है वो एक्टिंग है. शी इज एन एक्ट्रेस ऑल्सो. और बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपको ऑफिस से ही घर भी नहीं जा पाई आप और वहीं से डायरेक्ट ज्वाइन हुई. वेलकम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. विषय बड़ा है, आप आराम से समाप्त कीजिए. धन्यवाद. Please unmute, Smita. Yeah, done. Namaste. Thank you Dinakaran sir for a beautiful write-up. आज मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा. आज जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज बुद्ध पूर्णिमा, जो वैशाख पूर्णिमा बोला जाता है. ये जो वैशाख पूर्णिमा है वो हम लोगों के लिए एक शुभ दिन है. उसमें एक नहीं तीन अच्छा चीज हुआ था उसी दिन. जैसे इस दिन पर उसको हम शुभ दिन बोलते हैं क्योंकि इस दिन पर बुद्ध जन्म लिया था
एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में, और इस दिन उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने अपना नश्वर शरीर भी त्याग किया था। तो ये हमारे लिए और बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन है जो इस साल 5 तारीख मई 5 को हो रहा है। इस रिलेटेड एक अच्छा चीज है जो आप लोगों ने सबको पता होगा, CWD leadbeater उनके बुक्स जो है द मास्टर्स एंड द पाथ में मेंशन किया है कि इसी दिन इस सुबह पर भगवान बुद्ध स्वयं को तीर्थ यात्रियों की भीड़ की उपस्थिति में प्रकट करते हैं। बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि वे स्वयं इस समारोह में उपस्थित थे और प्रभु बुद्ध की अपार उपस्थिति का महसूस किया है। वो लोग अपने फील किए हैं कि वहां पे बुद्ध प्रेजेंट थे। भगवान मैत्री इस समारोह में इतनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जो हमारा मास्टर मैत्री है, तो जब ये समारोह होता है, वैशाख पूर्णिमा होता है, तो वहां पे खुद प्रेजेंट रहते हैं एंड वो समारोह को मैनेज करते हैं। ये बिलीव किया जाता है, जो सारे लोग वहां पे उपस्थित होते हैं वो भी उन्होंने फील किया है, दे आर फील दैट। HP ब्लाभास्की उन्होंने ये किया है कि सभी मौजूदा दर्शनों में से बौद्ध धर्म सबसे कम समझा गया है, शायद इसीलिए कि बुद्ध द्वारा सिखाए गए कुछ सत्य सामान्य समझ के लिए बहुत गहरे थे। इसका मतलब ब्लाभास्की ये बोलते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध ने जो हमें टीचिंग दिया है, बहुत कम इन लोगों को इस चीज को समझते हैं। उसका जो डीप मीनिंग है, उसका जो गहरा अर्थ है, उसको कॉमन लोग, जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। ये और भी एक चीज है, उसी टाइम हमारा जो हिंदुओं का रूढ़िवादी एक सेक्शन होते थे, जो ये सारे न्यू चीज को, नया चीज को एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में बहुत विरोध करते थे। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें उन्होंने स्वयं सरल, मधुर और तार्किक कहा था, वास्तव में उस विशेष वर्ग के लिए नहीं है जो बौद्ध धर्म लेते हैं। ये कहा गया है कि जो बुद्ध ने जो कुछ लिखा है, ये ओनली जो लोग बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं उसके लिए, ये सबके लिए, सारे कॉमन पीपल के लिए। एंड अभी का जो हमारा सिचुएशन है, हमारा जो पृथ्वी में, जो हमारा वर्ल्ड में जो अभी का सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में बुद्ध जिस चीज के ऊपर हमें शिक्षा दिए थे, वो ज्यादातर चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए। बुद्ध ने धर्म पर शिक्षा दी थी। धर्मपद, उनका जो एक बुक है, धर्मपद के प्रारंभिक श्लोक में कहा गया है, धर्म के पास मन है। क्यों? क्योंकि अग्रदूत मन के माध्यम से महान हो जाते हैं। जैसे उन्होंने ये बोला है, यदि कोई दुष्ट मन से बोलता है या कार्य करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चलता है जैसे गाड़ी की पहिया घोड़े के पैर को खींचता है। आप ये समझ रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज एक गलत, एक नेगेटिव सोच के साथ शुरू करते हैं, तो क्या होता है ना, वो जो नेगेटिव चीज वो हमारा पीछे पीछे आता है, जैसे कि ये जो गाड़ी को क्या बोला ना, घोड़ों के पैर की खींचता है, घोड़ा ही जैसे खींच रहा है, उसी हिसाब से होता है लाइफ। जैसे अगर आप कोई शुद्ध मन से कुछ चीज बोलते हैं या कुछ चीज करते हैं, तो प्रसन्नता उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आप दोनों के अंदर आप अंतर समझ सकते हैं कि अगर हम कोई गलत इंटेंशन में, गलत सोच के साथ कोई काम करते हैं, तो हमारा लाइफ कैसे होता है, हमारे पीछे पीछे सारा नेगेटिव चीज जाता है। लेकिन अगर कोई चीज हम शुद्ध मन से, प्योर हार्ट में करते हैं, तब जो हमारा प्रसन्नता, जो सेटिस्फेक्शन है, वो हमारे छाई की तरह, हमारा शैडो की तरह हमारे साथ रहता है। गौतम बुद्ध वो पाली भाषा में बात करते थे। उसी टाइम एक्चुअली ज्यादा संस्कृत यूज होता था, लेकिन संस्कृत सबके समझ में नहीं आता था, तो जो लोकल लैंग्वेज है पाली भाषा, वो उससे सबको प्रवचन देते थे, या बोले उनका जो शिक्षा है वो पाली भाषा में देते थे। उन्होंने इतना अच्छे जो क्या बोलते हैं उसको, उपमा देते हैं, जो
कंपेयर करते हैं वो लोकल लैंग्वेज में करते हैं। सो कि जो सामने जो बैठे हैं, चाहे वो बुद्धिमान हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उसको समझ में है। अगर हम कोई चीज लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या हम जो बातचीत करते हैं लोकली, अगर हम उसी हिसाब से बात करते हैं, जो सामने वाला होता है उसको समझ में जल्दी समझ में आ जाता है। एक चीज बुद्ध ने और एक बार बोला था कि वो आम लोगों से सीखने का तैयार रहते हैं। ये नहीं कि वो हर टाइम जो बुद्धिमान थे उससे बात सुनने या समझने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो एक साधारण मानव, उससे भी वो बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि लाइट ऑफ एशिया में एडविन अर्लैंड ने कविता के बनने थे, उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है कि एक बार देवदासियों ने बुद्ध जहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे या बैठे थे, उस टाइम देवदासी मतलब जो नर्तकी है, जो डांस करते हैं भगवान के सामने, उनको देवदासियां बोला जाता है। जब वो वहां पे जा रहे थे तो उन लोग आपस में बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि अगर सितार जो इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग है, अगर सितार एकदम हाई करोगे या अगर एकदम ऊंचा या एकदम नीचे से अगर उसको बजाओगे तो उनका प्रॉपरली रिदम से काम नहीं हो पाता है। अगर उसका मीडियम में साधारण है, जो बीच का है, ना हाई ना लो, अगर आप बीच में वो सितार बजता है, देन उनका जो परफॉर्मेंस हो, जो भी है, उनका जो कनेक्शन है वो ठीक से जाता है। तो उससे बुद्ध ने सीखा, जैसे यही बोला है कि मूर्ख अक्सर बुद्धिमानों को सिखाता है। मैं जीवन के इस स्तर पर बहुत अधिक दबाव डालता हूँ जैसे। तब उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। उन्होंने बोला, मैंने ये बात सुना था कि ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, लेकिन जो मिडिल है, जो मध्यम पाथ है, अगर हम उसको लेते हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में इजी होता है। इसीलिए बुद्ध ने उनके लाइफ में ना बेसिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लोग लेते हैं ना कि बिना खाए पिए बैठ के मेडिटेशन करते बैठते हैं, मतलब हार्ड लाइफ लेते हैं, वो नहीं किया था या बिल्कुल लो नहीं लिया था। बीच का स्ट्रिंग जो ना उनको किसी को कष्ट हो या शारीरिक पीड़ा हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, या बिल्कुल कुछ ना बोले, इसलिए बीच का लाइफ बुद्धदेव शरण फॉलो करते थे। जैसे बुद्ध जी का एक अपने शिष्यों के लिए बुद्ध की एक और सलाह बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कलाम सूत्र के नाम से जाना जाता है, जो मास्टर के चरणों में शामिल है। जो हमारा एट द फीट ऑफ द मास्टर, उसमें भी वो चीज को लिखा गया है। इसीलिए उसने ये लिखा है कि आपको एक विचार केवल इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई अन्य लोग ऐसा सोचता है या ये चीज बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये आपको सबको पता है, हम लोग सारे एट द फीट ऑफ द मास्टर सब पढ़े हैं और सबको ये बुक्स भी अच्छा लगता है, बिकॉज जो इतना इजीली इतना अच्छा चीज लिखा गया है, सो दैट हम उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो उसमें यही चीज बुद्ध ने जो उनका कलाम सूत्र में लिखा है कि आपको दूसरे ने जो कुछ कहा है या पहले से जो नियम चला आ रहा है, आप उसको आंख बंद करके फॉलो करो। वो ये बोलते हैं आप उसको रियलाइज करो, अपने लाइफ में लगाओ, देन आप उसको विश्वास करो, उसी हिसाब से जाओ। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक वे है, जैसे हम थियोसोफिस्ट भी वो बिलीव इन द साइंटिफिक वे। हम लोग ऐसे कोई भी चीज को आंख बंद करके नहीं लेते, हम पहले उसको प्रूव करते हैं, खुद देखते हैं, देन उसको हम फॉलो करते हैं। ये भी हमारा जो मास्टर, जितने सारे मास्टर्स है, ये चीज सारे बुक्स में यही चीज लिखा जाता है कि आप ये सोचो। इवन ब्लावात्स्की ने भी बोला है कि मैंने ये लिख दिया, ये सोचकर आप मत फॉलो करो कि ये ब्लावात्स्की ने लिखा है तो ये हमें फॉलो करना है। पहले आप उसको समझो, आप उसके लाइफ में लाओ, उसका एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद आप उसको फॉलो करो। बुद्ध ने जो लिखा है यह हमें सबको पता है, हम सब बचपन से ही पढ़ के आए हैं। बुद्ध के रिलेटेड लाइफ हमें स्कूल से कॉलेज में हिस्ट्री जिसका है सब लोग हम पढ़ के आए। उसमें है जीवन की लालसा दुख का कारण है। उन्होंने उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। दुख या कष्ट, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख से मुक्ति का मार्ग।
पहला सत्य है, दावा है कि जब तक मनुष्य ये नहीं जानता कि उसे कैसे जीना है, तब तक सभी प्रकट जीवन दुख है। जब तक हम खुद फील नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते एक्चुअली हमें जीना कैसे है, तो क्या होता है, हम हर चीज हमें चाहिए होता है, हमें पता नहीं है कि कितना चीज होने से हम एक आराम से जी सकते हैं, तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो पहला चीज है कि आप जानो कि आपको क्या चाहिए, आपको जीवन में क्या चाहिए और कहाँ तक मिलने से आप ठीक से रह पाओगे, उसका एक लिमिट लो। तभी आपको ये जो, क्योंकि अगर हमें कुछ चीज नहीं मिलेगा तो फिर हमें कष्ट होता है कि मुझे, मेरे पास ये नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी मेरे फ्रेंड के पास इतना बड़ा मकान है, गाड़ी 4 है और आराम से बैठती है, घर में ये है वो है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं दुखी होंगी। अगर ये मैं सोचूंगी नहीं, मेरे पास जितना है, जो मुझे चाहिए, मुझे एवरीडे लाइफ पे जीने में जितना हेल्प करेगा उतना मेरे पास है, तो मैं खुशी नहीं रहूंगी। तो यही चीज है, अगर हमें जब तक पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए है, तब तक ये हमारा एक दुख का कारण बनेगा। देन नेक्स्ट रिलेटेड टू दैट, दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा है। मृत्यु हालांकि जीवन की एक अपर्याय वास्तविकता है, कोई लोगों को हिलाकर रख देता है, ये सच बात है। हम चाहे जितना भी बोले कि हमारा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, हम उसके साथ लिंक नहीं है, हमें जानते हैं कि हम थियोसॉफी पढ़े हैं, हमें पता है कि आफ्टर द डेथ इसमें सोल का डेथ नहीं होता है, ये बॉडी का होता है, वो तो रहता है। फिर भी हम इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर घर में किसी का कुछ होता है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, हम उसके साथ खुद को अटैचमेंट में रहते हैं। जैसे मैं अगर मेरा अपना पर्सनल कुछ इंसिडेंट बोलूंगी, अभी रिसेंटली मेरा छोटा भाई वो चला गया, ही पास्ट आउट, मेरा छोटा भाई है, तो मैं उसके साथ मेरा जो अटैचमेंट है मेरा अभी तक जान नहीं पा रहा है। मैं खुद बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उससे बाहर निकलूं, लेकिन नहीं आ पा रही। तो ये जो चीज, ये जो दुख है, ये मेरा ही है, क्योंकि मैं उसके अटैचमेंट से बाहर नहीं आ पा रही। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका जो अटैचमेंट है, स्मिता जी, प्लीज कंपाइल इन 3 minutes. Thank you. या श्योर अटैचमेंट है तो आप उससे दूर जाइए। देन दुख का निरोध, आप कैसे दुख का निरोध करें? इस दुनिया में रहना जाए तो दुख एक का हाल में, लेकिन हम इस दुनिया में बिना किसी लगाव के रहना जो हमें बांध देगा। ये बोला गया है कि आप अगर दुनिया में रहना है तो हम बिना लगाव, किसी के साथ अटैचमेंट के बिना हमें रहना है। लेकिन बुद्ध ने इस निर्धारित तक, क्योंकि इस समय सभी के लिए व्यवहारिक है, तभी इस तक पहुंच सकते हैं। और हम ऐसा करना चाहिए क्योंकि जब हमें इसे प्राप्त कर लेते हैं तभी हम वास्तव में और प्रभावी रूप से अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी पुरोहित या शास्त्र की सहायता के अपने स्वयं के प्रयासों से उस लालसा को समाप्त कर सकता है। बोले खुद जाकर ट्राई करोगे तब ये आप कर सकते हो, आपको किसी का हेल्प लेना जरूरी नहीं है। देन दुख से मुक्ति का मार्ग, उसमें हम लोग पता है आर्य अष्टांग मार्ग है जो इसके अंदर वो कवर होता है। जैसे सही विश्वास, आप एक व्यक्ति के लिए इस सही ढंग से समझना और उस पर विश्वास करना जीवन काफी अलग है। वो अपने उतार चढ़ाव, असफलता और कमी के समान रूप से स्वीकार करते हैं, तभी उसको फिर दुख नहीं होता। तो एक विश्वास होता है अपने ऊपर। देन सही विचार, एक व्यक्ति जो अपने विचारों की रक्षा करता है वो एक वास्तविक संवेदनशील है। हमारा ज्यादातर विचार बेकार और असत्य है। हम लोग जो सोचते हैं, ज्यादा से जो सोचना, जो भी हम सोचते हैं वो इतना यूजफुल नहीं होता है। हम उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। बट ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो सोच रहे हैं तो सोचने के एक जो जो सत्य चीज है उसके ऊपर सोचो। जो फालतू की चीज सोच के उसमें आप समय बर्बाद मत करो, आपका उसमें गलत प्रभाव पड़ेगा, आपका सोचने में, समझने में, कार्य में उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। देन सही भाषण, आप क्या बोल रहे हैं, हमारा भाषण केवल हम जो सोचते हैं उसका ही प्रतिबिंब है। हम जो सोच रहे हैं वही चीजें हम बोलते हैं। भाषण का लिमिट टेस्ट यही है कि वो सच्चा
आपका भाषण कैसे होना चाहिए? सच्चा, दयालु और सहायक होना चाहिए। देन सही कार्रवाई। निश्चिंत है, यदि हमारे विचार शुद्ध हो तो स्वाभाविक रूप से हमारी वाणी शुद्ध होगी, जिसके बाद सही कर्म होगा। ये सारे ऑल आर इंटररिलेटेड। देन सही आजीविका। हम खुद के लिए, जैसे अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमें रहना है, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो काम है, हमें क्या करना चाहिए, आप किस हिसाब से खुद का जीविका निर्वाह करना चाहिए, उसको आपको देखना है। आपको सही वे में, सही तरीके से अपना जीविका निर्वाह करना चाहिए। देन सही परिश्रम या सही प्रयास। आप केवल इतना काफी नहीं है कि हम अपने आप को बुराई से दूर रखें, बल्कि उससे हमें अच्छाई भी करनी चाहिए। ये नहीं कि ओनली हम गलत चीज से दूर रहे, लेकिन हमें कुछ अच्छा चीज करना चाहिए। कुछ शक्ति है, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी है। हर दिन हमें इसका इस्तेमाल दुनिया की मदद के लिए भी कर सकते हैं। देन सम्यक स्मृति या सम्यक स्मरण। इसमें बोला गया है, जैसे यहाँ पे दिनकरन जी एक कंपैरिजन दिया है विद लैपटॉप एंड द कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर में जितना गंद चीजें उसका हम डिलीट करते हैं, स्पैम में लेके डिलीट करते हैं, ऐसे ही कोई भी आपका कोई भी गलत सोच या गलत एक्सपीरियंस, उसको आपको माइंड से डिलीट करना है। आपको सही चीज याद रखना है, सही काम को याद करना है, जो गलत चीज, गलत थिंकिंग है, उसको डिलीट करना है। देन सम्यक ध्यान या सम्यक एकाग्रता। इस सब के लिए, ये सब मेंटेन करने के लिए आपको दिन में थोड़ा सा ध्यान और एकाग्रता, प्राणायाम, ध्यान आपको करना चाहिए, सो दैट आप अपना माइंड को कंट्रोल में रह सकते हैं। तो ये है अष्टांग दैट्स फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Smita ji. You made it on the time. Dinakaran ji, please continue with part 2. Okay, thank you, NANDKUMAR. दिनाकरन जी आप म्यूट हो गए। नहीं, वो कुछ तैयारी कर रहे हैं उसमें। आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट करिए ना, आवाज नहीं आ रहा। आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। जी, This is now mute. now we can listen you. Okay, thank you. The influence of Buddha's teachings, popularly known as Buddhism, flourished under the patronage of great kings like Ashoka. Buddhism is considered as the first organized religion in this world with monks and monasteries. The Buddhist monks traveled throughout the year except 4 months during the rainy season and taught the message of Buddha. They accepted the hospitality of kings, royals, and also the poor people like cobblers and outcasts. When the caste system was very strictly followed, they showed the foolishness of it by their practical living. Irrespective of caste, creed, and color, they imparted the wisdom. Great universities like Nalanda were run by them, which attracted thousands of students from faraway countries. They were centers of learning from 5th century to 12th century until they were destroyed by the invaders. The libraries with a huge collection of palm leaf manuscripts were the specialty of such libraries. Those who loved wisdom stayed there years together and wrote many books on Buddhism and other branches of learning, such as astronomy, medicine, etc. The contribution of Buddhism in the field of Ayurveda is well known. A new branch of medicine based on mercury was innovated by Nagarjuna while practicing alchemy. Ayurveda and Buddhism coexisted. We can find out a lot of references in Buddhism related to books regarding Ayurveda and Ayurvedic medicines. Even
in the farthest corner of South India, Kerala had many Buddhist monasteries and viharas. One of the reasons for the prominence of Ayurvedic treatment and medicine system is due to the influence of Buddhism. Though Buddhism do not have much followers in India, like other Asian countries, the contribution and influence of Buddhism cannot be ignored. The national flag of India bears the Ashok Chakra, the wheel of Dharma. Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, embraced Buddhism in his last days. He devoted a complete volume number 22. It is in Malayalam. This is the 22nd volume on Buddha and Buddhism. This whole volume is related to Buddha and Buddhism. While commenting on the caste system, Ambedkar said that it is like a 4-story structure without any staircase. Neither those who live in the ground floor can go up, nor those who are in the upstairs can come down. A structure without a staircase. Withstanding the challenge of the Indian caste system and priesthood, Buddhism is still in the living stream of Indian spirituality because it is based on the cardinal values like truth, non-violence, and brotherhood of humanity. The religion without these values are a dead corpse. Some consider Buddha as a Hindu revivalist. Up to some extent, it is true also. Shankaracharya also tried to follow the footprints of Tathagata, and the Orthodox community mocked him as Prachanna Buddha, Buddha in disguise. Like Buddha, Shankara also denounced animal sacrifice and other evil practices in Buddhism. The wonderful book which popularized Buddhism in the Western world is Light of Asia by Edwin Arnold. This book was published in 1879 in London. Arnold was much attracted by the religions in Asia, especially Hinduism and Buddhism. He wrote books like The Song Celestial based on Bhagavad Gita, Pearls of Faith on Islam, and The Light of the World or The Great Consummation on Christ. But The Light of Asia became very popular and even Hindu monks like Vivekananda praised it. Light of Asia was translated into various world languages and regional languages like Malayalam. Numerous books in prose based on Light of Asia was also published by different authors. Buddhist stories are known as Jataka Kathas are also well known. There are a lot of books in Malayalam. I have a bundle of books with me. If time permits, I will show you. The beauty of Light of Asia is that it contains major incidents in the life of Buddha. His childhood, youth, marriage, leaving the palace, wife and child, great penance under the Bodhi tree. They are all depicted very poetically. The story of Swan and Siddhartha is well known. Prince Siddhartha served the swan which was wounded by Devadatta. When there was a dispute between Devadatta and Siddhartha on the ownership of the swan, they were taken to the palace for a wise decision. There appeared an unknown priest who said, "If life be aught, the savior of a life owns more the living thing than he can own, who sought to slay the slayer spoils and waste. The cherisher sustains, give him the bird." That was the order of that sannyasi. In this merciless world of wars and cruelty against birds, animals, and even nature, the fundamental question raised by Siddhartha is relevant. The owner of life is he who serves it, sustains it, and supports it. When Siddhartha left the palace in the midnight, he was accompanied by his charioteer Channa. Up to the border of the country he accompanied. While leaving the prince, Channa asked him, "Bethink thee of my lord, thy father's grief. How shalt thou help them? First undoing them." The answer of Siddhartha at that time, he was not a Buddha at that time. That answer of Siddhartha is very relevant. Friend, that love is false, which clings to love for selfish sweet of love. I who love is more than joys of mine. Yeah, more than joys of theirs depart to serve them and all flesh, if utmost love away. Seeking one's own pleasures is not love at all. Self-pity is not love.
The Eightfold Path is beautifully and poetically described in this book. At one place, the limitation of human thought is described. Om Amitaya, measure not with words the immeasurable, nor sing the string of thought into the fathomless. Who asks doth err? Who answers err? Say not. Shall any gazer see with mortal eyes? Or any searcher know by mortal mind? Veil after veil will lift, but there must be veil upon veil behind. Another important book written by our founder president is Buddhist Catechism. Colonel Olcott is considered as an incarnation of Emperor Ashoka. The first edition of the Buddhist Catechism was published in 1881. This is the book. This is maybe the 16th or 60th or 70th edition of this book. A number of editions were published thereafter. The certificate to the first edition was given by His Holiness Sumangala, High Priest of Sripada and Gali. He recommended the work to teachers in Buddhist schools and to all schools who wish to impart information to beginners about the essential features of Buddhism. Even in the year 1897, it had the 33rd edition. The preface to the 42nd edition was written by Dr. Annie Besant. Buddhism is explained in plain language in a question-answer form. Nearly 381 questions are answered in this book. Colonel Olcott started schools in Sri Lanka and tried to reconcile the two schools of Buddhism. In honor of H.S. Olcott, the Sri Lankan government issued postal stamps and erected a statue in Colombo fort in front of the main railway station. He was the first well-known American to make a formal conversion to Buddhism. He secured for Ceylon Buddhists freedom from religious persecution and declared Vaisak as a public holiday. How Buddhists were persecuted by other people. If you refer the 1883 incident in the Google, you can see how many Buddhists were killed at that time. When the wheel turned in 2019, many Christian people were killed by the terrorists. So the law of karma is slowly grinding its mill. After embracing Buddhism, H.S. Olcott and H.P.B. stated, our Buddhism was that of the master adept Gautama Buddha, which was identical in the wisdom religion of the Aryan Upanishads and the soul of all the ancient world faith. Our Buddhism was, in a word, a philosophy, not a creed. In 1880, there were only 2 schools in Ceylon managed by the Buddhists. Due to the efforts of H.S. Olcott, number rose to 205 schools and 3 colleges in 1907. There he passed it. Olcott traveled in bullock carts accompanied by interpreters and spoke to thousands in remote villages. The flag designed by HSO is used by Buddhists as a symbol of religious unity. This is the flag designed by Colonel Olcott. Then another important book, very handy book, was released by TPH, The Noble Eightfold Path. This book contains 2 talks given by Dr. Annie Besant and Bishop Leadbeater in 1907 and 1914, respectively. Dr. Besant's talk was delivered at Ananda College, Colombo. C.W. Leadbeater's talk was delivered in 1914 at Maulmein in Burma, now known as Myanmar, through the medium of an interpreter. C.W. said in the opening words, you asked me to tell you the way to nirvana. The way to nirvana is to follow the teachings of our Lord Buddha. It is not enough only to talk about following the precepts. It is not enough to go to temples, to take Panchashila and offer flowers. Great Buddha wish you to live. Theosophical Society and its leaders were instrumental for popularizing Buddhism in the Western world and also in many Asiatic countries like Sri Lanka, Japan, and Myanmar. Then came a very small book known as Buddhist Catechism.
smaller Buddhist catechism. This is a compilation by C.W. Leadbeater and C. Jinrajadasa. First edition was in 1902. The book is in question and answer form and contains a number of questions and answers related to the teachings of Buddhism. Then comes another scholarly work by Brother Dr. Kunjan Raja, former director of Adyar Library, published in 1956. Foreword was written by Sri Prakasha, then governor of Madras. The book was published on Vaisak Poornima when the world was celebrating the 2500th birth anniversary of Lord Buddha. If I am informed properly, he was the great uncle of Dr. Kunjuni Raja, who he was also the director of the Adyar Library. Then an important work in the last part of the century came. It was Buddhist and Theosophical movements. The author of this book is Dr. C.V. Agarwal, very well known to you people because he was the General Secretary of the Indian section of the Theosophical Society. In her foreword, Dr. Radha Bernier, President of the Theosophical Society, said, Dr. C.V. Agarwal has gathered in this book interesting and useful information on the great work done by Colonel H.S. Olcott to help the Buddhist cause. He has emphasized that true Buddhists and the real Theosophists are not concerned with labels, but the welfare of humanity for which Lord Buddha himself toiled. The book contains very rare photographs of H.S. Olcott with Sumangala and other venerable monks. The photographs of Annie Besant, Dhammapala, and H.S. Olcott at the International Convention at Adyar in 1893, the year when Dr. Besant landed in India, 1893. In the inner page of the book, you can find the certificate issued by the high priest, including Sumangala, to H.S. Olcott, the powers to register persons as Buddhists of any nation who may make him an application to administer them in 3 refugees and 5 precepts and to organize societies for the promotion of Buddhism. Usually, this is the certificate given by Sumangala and other 5 high priests of Buddhism, which authorizes Colonel Olcott to enroll anybody to Buddhism by taking Charanatrayas and Panchashila. Many of the Buddhist monks like Dharmapala joined the Theosophical Society in Adyar. Also, many monks used to come for the International Convention and deliver the lectures. They are all members of the Theosophical Society. I would like to conclude this talk by chanting the Maha Mangala Sukta, which is recited during the Vaisak Poornima day. So, the great humility, I would like to chant this Maha Mangala Sukta, or the greatest blessing. When yearning for good, many devas and men have held diverse things to be blessings. Do thou then inform us, O Master, what is the greatest blessing? Not to serve the foolish, but to serve the wise, to honor those worthy of honor. This is the greatest blessing. To dwell in a pleasant land, to have done good deeds in a former birth, to have a soul filled with right desires. This is the greatest blessing. Much insight and much education, self-control and a well-trained mind, pleasant words that are all well spoken. This is the greatest blessing. To support father and mother, to cherish wife and child, to follow a peaceful calling. This is the greatest blessing. To bestow alms and live righteously, to give help to one's kindred, to do deeds which cannot be blamed. This is the greatest blessing. To abhor and cease from sin, to abstain from strong drink, not to be wary is well-being. This is the greatest blessing. Reverence and loyalness, contentment and gratitude, the hearing of the law at due seasons. This is the greatest blessing. To be long-suffering and meek, to associate with the tranquil, religious talk at due seasons. This is the greatest blessing. Self-restraint and purity, the knowledge of the 4 great truths, the realization of nirvana. This is the greatest blessing. Beneath the stroke of life's changes, the soul that stands unshaken, passionless, unsorrowing, secure.
This is the greatest blessing. Invincible on every side is he who acts thus. On every side he walks in safety. And this is the greatest blessing. क्या बात है दिनाकरण जी, बहुत बहुत it was really lovely. And without wasting time, please go ahead, sir. Raut ji, please go ahead. Listen the Marathi. आजच्या चर्चेचा आपण दुसरा भाग बघू आता. बौद्ध धर्म म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बुद्धांच्या शिकवणींचा प्रभाव अशोकासारख्या महान राजांच्या आश्रयाखाली वाढला. बौद्ध धर्म हा भिक्षू आणि मठांसह जगातील पहिला संघटित धर्म मानला जातो. आयुर्वेदाच्याही क्षेत्रात बौद्ध धर्माचे योगदान सर्व ज्ञात आहे. रसायनशास्त्राचा सराव करताना नागार्जुनांनी पाऱ्यावर म्हणजे मर्क्युरीवर आधारित औषधांची नवीन शाखा शोधून काढली. आयुर्वेद आणि बौद्ध धर्म एकत्र अस्तित्वात होते. आयुर्वेद आणि आयुर्वेदिक औषधासंबंधी बौद्ध धर्माशी संबंधित पुस्तकांमध्ये आपल्याला बरेच संदर्भ सापडतात. दक्षिण भारताच्या अगदी दूरच्या कोपऱ्यात केरळमध्ये अनेक बौद्ध मठ आणि विहार आहेत. आयुर्वेदिक उपचार आणि औषध पद्धतीला महत्व येण्याचे एक कारण म्हणजे बौद्ध धर्माचा प्रभाव. इतर आशियाई देशांप्रमाणे भारतात बौद्ध धर्माचे फारसे अनुयायी नसले तरी बौद्ध धर्माचे योगदान आणि प्रभाव दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजावर अशोक चक्र किंवा धर्माचे चक्र आहे अंकित केलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बी. आर. आंबेडकर यांनी त्यांच्या शेवटच्या काळात बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यांनी बुद्ध आणि बौद्ध धर्मावर संपूर्ण खंड म्हणजे खंड क्रमांक 22 मल्याळम मध्ये समर्पित केला. आणि जाती व्यवस्थेवर भाष्य करताना आंबेडकर म्हणाले की ही 4 मजली इमारत आहे, वास्तू आहे, ज्याला जिना नाही म्हणजे स्टेअरकेस नाही आणि तळमजल्यावर राहणारे वर जाऊ शकत नाही आणि वरच्या मजल्यावर राहणारे खाली येऊ शकत नाही. म्हणजे जिना नसलेली ही रचना आहे, ही जाती व्यवस्था. सर एडविन अर्नॉल्ड यांनी लाईट ऑफ एशिया हे पुस्तक लिहिले. 1879 मध्ये लंडन मध्ये प्रथमच प्रकाशित झाले. अर्नॉल्डला आशियातील धर्म विशेषतः हिंदू धर्म आणि बौद्ध धर्माचे खूप आकर्षण होते. त्यांनी भगवद्गीतेवर आधारित द सॉंग सेलेस्टियल, पर्ल्स ऑफ फेथ ऑन इस्लाम अँड द लाईट ऑफ द वर्ल्ड आणि द ग्रेट कन्झमेशन ऑन ख्राइस्ट हे पुस्तकी लिहिली. पण लाईट ऑफ एशिया खूप लोकप्रिय झालं आणि विवेकानंदासारख्या महापुरुषाने देखील त्याची प्रशंसा केली. लाईट ऑफ एशियाचे या पुस्तकाचे सौंदर्य असे आहे की त्यात बुद्धाच्या जीवनातील प्रमुख घटना आहे. म्हणजे त्यांचे बालपण, बुद्धांचे बालपण, तारुण्य, त्यांचे लग्न, त्यांचा राजवाडा, पत्नी आणि मुलाचा त्याग, बोधी वृक्षाखाली मोठी तपश्चर्या करून त्यांना ज्ञान प्राप्ती होणे, हे सर्व अतिशय काव्यमय पद्धतीने चित्रित केलेले आहे. कर्नल ओलकॉट थिओसॉफिकल सोसायटीच्या वर्तुळामध्ये असं समजले जाते की कर्नल ओलकॉट हा सम्राट अशोकांचा पुनर्जन्म मानला आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसाराची पहिली आवृत्ती 1881 मध्ये प्रकाशित झाली. त्यानंतर अनेक आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या. त्यापैकी 42व्या आवृत्तीची प्रस्तावना डॉक्टर ॲनी बेझंट यांनी लिहिली होती. बौद्ध धर्माचे स्पष्टीकरण सोप्या भाषेत प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात दिले आहे. या पुस्तकामध्ये जवळपास 381 प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. कर्नल ओलकॉट यांनी श्रीलंकेत शाळा सुरू केल्या आणि बौद्ध धर्माच्या 2 शाळांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल कर्नल ओलकॉट यांच्या सन्मानार्थ श्रीलंकन सरकारने
त्यांच्या छायाचित्राचे एक पोस्टल स्टॅम्प जारी केला होता आणि मुख्य रेल्वे स्टेशन स्थानकासमोर कोलंबो फोर्ट मध्ये त्यांचा एक पुतळा देखील उभारला. बौद्ध धर्मात औपचारिक रूपांतर करणारे ते पहिले प्रसिद्ध अमेरिकन होते. त्यांनी सिलोन बौद्धांना धार्मिक छळापासून मुक्ती मिळवून दिली आणि वैशाखी पौर्णिमेची सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित देखील करून दिली. बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर कर्नल ऑलकॉट आणि मॅडम ब्लॅवट्स्की यांनी सांगितले, आमचा बौद्ध धर्म हा गुरु पवित्र गौतम बुद्धांचा होता. तो आर्य उपनिषदांचा ज्ञान धर्म होता आणि सर्व प्राचीन जागतिक विश्वासांचा आत्मा होता. आमचा बौद्ध धर्म हा एका शब्दात तत्वज्ञान होता, पण तो पंथ नव्हता. तसेच कर्नल ऑलकॉट यांनी डिझाईन केलेला ध्वज बौद्ध धर्मीय एकतेचे प्रतीक म्हणून वापरतात. 1887 मध्ये कर्नल ऑलकॉट यांनी द गोल्डन प्रिसेप्ट्स ऑफ बुद्धिझम या नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले. त्यानंतर नोबल एटफोल्ड पाथ या थिओसॉफिकल पब्लिशिंग हाऊसने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकात डॉक्टर एनी बेझंट आणि बिशप CW लेडबीटर यांनी अनुक्रमे 1907 आणि 1914 मध्ये दिलेले 2 भाषणे आहेत. डॉक्टर बेझंट यांचे भाषण आनंदा कॉलेज कोलंबो श्रीलंका येथे देण्यात आले. CW लेडबीटर यांचे भाषण 1914 मध्ये बर्मा म्हणजे म्यानमार मध्ये मौलमेन येथे दुभाषाच्या माध्यमातून देण्यात आले. CW लेडबीटर सुरुवातीच्या शब्दात म्हणाले, तुम्ही मला निर्वाणाचा मार्ग सांगण्यास सांगा. निर्वाणाचा मार्ग म्हणजे आपल्या भगवान बुद्धांच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करणे. केवळ उपदेशांचे पालन करण्याबद्दल बोलणे पुरेसे नाही. मंदिरात जाणे, पंचशील घेणे पुरेसे नाही. अशा पद्धतीने महान गौतम बुद्धांनी आपल्याला जगण्याची इच्छा व्यक्त केली. थिओसॉफिकल सोसायटी आणि त्यांचे नेते पाश्चात्य जगात आणि श्रीलंका, जपान, म्यानमार इत्यादी सारख्या अनेक आशियाई देशांमध्ये बौद्ध धर्म लोकप्रिय करण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. लहान बौद्ध धर्म प्रसार हे CW लेडबीटर आणि C जिनराज दासा यांचे संकलन. पहिली आवृत्ती 1902 मध्ये होती. हे पुस्तक प्रश्नोत्तर स्वरूपात आहे आणि त्यात बौद्ध धर्माच्या शिकवणीशी संबंधित अनेक प्रश्न उत्तरे आहेत. धम्मपद हे काम 1956 मध्ये प्रसिद्ध अड्यार लायब्ररीचे माजी संचालक डॉक्टर C कन्नान राजा या महान संस्कृत विद्वानांचे होते. अग्रवेग मद्रास म्हणजे आताचे चेन्नईचे तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश यांनी लिहिला होता. हे पुस्तक वैशाखी पौर्णिमेला प्रकाशित झाले. विशेषतः तेव्हा सर्व जग भगवान बुद्धांची 2520 जयंती साजरी करत होते. नंतर बौद्ध आणि थिओसॉफिकल चळवळी हे पुस्तक डॉक्टर CB अग्रवाल यांच्या अनेक वर्षांचे संशोधन आणि अभ्यासाचे फलित आहे. अग्रवाल इंडियन सेक्शन थिओसॉफिकल सोसायटी चे माजी सरचिटणीस होते. त्यांच्या अग्रलेखात डॉक्टर राधा बर्नियर ह्या इंटरनॅशनल अध्यक्ष थिओसॉफिकल सोसायटीच्या त्या म्हणाल्या, डॉक्टर CB अग्रवाल यांनी या पुस्तकात कर्नल ऑलकॉट यांनी केलेल्या महान कार्याची मनोरंजक आणि उपयुक्त माहिती गोळा केली. बौद्ध कारणाला मदत करण्यासाठी ऑलकॉट हा खरा बौद्ध आणि खरा थिओसॉफिस्ट मानवतेच्या कल्याणाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी भगवान बुद्ध स्वतः परिश्रम करतात यावर त्यांनी भर दिला आहे. 3 शरणागत आणि 5 उपदेश आणि बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी समाज संघटित करणे हा उद्देश आहे. सामान्यतः बौद्ध भिक्खूंना पंचशिला आणि सारनाथ येथे घेऊन
कोणालाही बौद्ध धर्मात प्रवेश देण्याचा अधिकार आहे. धम्मपालांसारखे अनेक बौद्ध भिक्खू नंतर थिओसॉफिकल सोसायटीत सामील झाले. अशा पद्धतीने या वैशाखी पौर्णिमेची, या महान दिवसाची, जगातल्या या महान दिवसाची आपण आज चर्चा केली आणि या चर्चेचा दुसरा भाग इथे संपत आहे. तरी सर्वांना शुभेच्छा. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. और स्मिता जी, मैं समय है वो है, इसलिए सीधा आपको कहूंगा कि आप शुरुआत करें. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, ये आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट है. बौद्ध धर्म का नाम से लोकप्रिय बुद्ध का शिक्षा का प्रभाव महान राजाओं के, जैसे अशोक जैसे महान राजाओं के समय पे फला फूला था, ज्यादा बढ़ा था. अशोक ने काफी इसको एक्सपांड किया था. बौद्ध धर्म है इस दुनिया में पहला संगठित धर्म माना जाता है. जब जाति व्यवस्था का बहुत सख्ती था, उसी समय नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय वो बनाया गया था, जहाँ से दूर दूर से हजारों छात्र आके पढ़ाई करते थे. और ये 427 से लेके 1197 तक ये प्रॉपरली चल रहा था और कोने कोने से छात्राओं आके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे. ये ओनली सब इंडिया में नहीं था. बौद्ध धर्म स्मिता जी, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है. हेलो, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. यार, क्यों? माइक्रोफोन पास लीजिए ना. बता रहा था. ओके, हाँ, परफेक्ट. अभी ठीक है. बिल्कुल परफेक्ट. ओके, सो बौद्ध धर्म ये सेंट्रल इंडिया में नहीं, ये बहुत दूर साउथ तक भी स्प्रेड किया था. जैसे केरल में भी बहुत सारे बौद्ध और बिहार भी है. बुद्ध धर्म नॉट ओनली एक धर्म के बारे में ओनली उपदेश दे रहा था, इसमें आयुर्वेदिक को भी बहुत आगे बढ़ाया था. ये हो सकता है हमारा भारत में ये ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, जैसे अदर एशियन कंट्रीज में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था. लेकिन बौद्ध धर्म के योगदान और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते. भारत का राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र या धर्म चक्र धारण करता है, तो इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म कितना इन्फ्लुएंस्ड था. तो हमारा भारत जो संविधान का निर्माताकार डॉक्टर अम्बेडकर, तो उनके लास्ट लाइन में, अंतिम जीवन में उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया था इस जाति धर्म के ऊपर, कास्टिसिज्म के ऊपर, कि कास्टिसिज्म जो हमारा चार बन है, ऐसा है जैसे ये 4 मंजिला मकान है जहाँ पे बीच में सी नहीं है. तो कास्टिसिज्म को उसी से सर एडविन आर्लैंड उनके बुक लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध के बारे में बहुत कुछ, उनका जो पोएम है उसमें कुछ उन्होंने वर्णन किया है. जैसे बुद्ध चाइल्डहुड, यूथ, एज, लिविंग द पैलेस, वाइफ एंड चाइल्ड, देन कब जैसे उन्होंने सन्यास लेने थे और उनको बुद्धि थी, सबके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में वर्णना किए हैं. हम सबने एक हंस का कहानी हम सबको पता है बचपन में, जैसे भाई झगड़ा हुआ था, फिर ये नियम किया था कि किसका हंस है. तो इस स्टोरी हमें सबको पता है. तो इस पोएम में लाइट ऑफ एशिया में बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है. ऑडियो अब आपका आएगा. कर्नल ऑलकट को अभी आ रहा है? हाँ, क्लियर है. इज इट ऑडिबल? यस. हाँ, जो हमारा मास्टर कर्नल ऑलकट, उनको एक्चुअली अशोक का अवतार माना जाता है. कर्नल ऑलकट ने श्रीलंका में स्कूल शुरू किए और बौद्ध धर्म के 2 स्कूलों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोशिश की.
उनके लिए श्रीलंका में उनके लिए अल्कट को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे डाक टिकट भी है, पोस्टल स्टाम्प है, उनका एक मूर्ति भी स्थापित किया गया था। तो और उन्होंने कर्नल अल्कट ने सिलोन में जो बौद्ध भिक्षुओं को जोड़ा जा रहा था वो उनको उनसे मुक्ति दिलाए थे और एक बैसाख को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। ये कर्नल अल्कट उसी समय जिस टाइम ये सारे सब प्रॉब्लम था वहां पे बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किए थे। उसके बाद ये जितने सारे बुक्स के बारे में डिस्कशन है दिनाकरन में आपको सारा बुक्स दिखाया है, तो मुझे बुक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि इस बुक के बारे में उन्होंने दिखाया है तो और वो कब पब्लिश्ड है, किसने किया है, उसमें ये सब लिखा है। तो उसके लिए वो जानने के लिए हमें एक्चुअली वो बुक्स पढ़ना पड़ेगा। उनके जो लास्ट जो एंडिंग किए थे, क्लोजिंग किए थे दिनकरन सर ने, वो था महामंगल सूत्र। तो मैं उसका एक हिंदी वर्जन पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना करेक्टली ये मैंने ट्रांसलेट किया या नहीं, बट ये मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। जब अच्छे के लिए तड़पते हैं तो कोई देव और पुरुष अलग अलग चीजों की आत्मा है। क्या आप हमें सूचित करते हैं, हे मास्टर, सबसे बड़ा वरदान क्या है? सुखों की सेवा नहीं करना, मूर्खों की सेवा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानों की सेवा करने के लिए, सम्मान के योग्य लोगों का सम्मान करने के लिए यह सबसे बड़ा वरदान है। एक सुखद भूमि में रहने के लिए पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हो, सही इच्छा से भरी आत्मा होना, यह सबसे बड़ा वरदान है। बहुत धन्यवाद। और सभी जो स्पीकर से मैं कहूँगा प्लीज वीडियो ऑन करें अपना। जी जी, दिनाकरन जी आ गए और नंदकुमार जी अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। या थैंक यू। अभी दिनाकरन जी आपने कहा था कि अगर समय रहेगा तो कुछ और दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, वरना ओपन टू ऑल कि वे कुछ कहना चाहते हो कोई भी तो कह सकते हैं। प्लीज शेयर, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और मैं स्पॉट करके आपको स्क्रीन पर ले आऊंगा, प्लीज शेयर कीजिए। शिंदे जी Thank you. Am I audible? Yeah, Am I yeah. audible? Yes, you are audible. This book is one of the oldest translations in Malayalam language by Thelaportha Narayanan Nambi. He was the editor of the Sanatana Dharmam magazine of the Kerala Theosophical Federation, published in 1915, 1915. You can imagine how the influence of Buddhism in India, also due to the work of the Theosophical Society. This book has got Pali transliteration, then Malayalam, and its translation also beautifully given by Thelaportha Narayanan Nambi, one of the oldest translations available in Malayalam language. There's another book known by a great poet in Malayalam, pure Malayalam. This is on Dharmapadam by Sarasa Kavi Mulur. It's very interesting. This another Buddhist the Dharmapada translation by Raghavan Tirumulpada. He was a great Ayurvedic doctor, very popular in Kerala because he interfered in many social issues in Kerala. This is the book of Raghavan Tirumulpada, Vaidya Bhushanam, Sanskrit scholar and also an Ayurvedic doctor. This is another prose version by another gentleman by Shurnad Ravi on Light of Asia. There are many stories like this on Buddha stories, Dhyana Buddha Katagal, etc., etc. This is a huge collection is there. So this shows that Buddha's influence is very much in the Indian languages, in the Indian culture, though the number of people are very few. Buddha has influenced many people and many lives. Yes. Thank you. Yes, Shinde ji. Oh, if anybody is telling, okay, No, thank no, you. there's no one now. Thank you, Dinakaran and RAUT and Choudhury.
SMITA ji. Very nice. And it is good to listen about the Buddha and Buddha's teaching. And DINAKARAN has explained number of events with the books actually he has shown. It is really wonderful propagation of what Buddha wants to propagate to all. Very much thankful for all the speakers, very nicely explained. The one thing, this Vaisak full moon is, as you have explained, on which Buddha born, enlightened, and went to Nirvana. So three things happened on this Vaisak full moon. It is very interesting to see why it is full moon. He was born, enlightened, and gone to Nirvana. So moon is the symbol of full reflection of light of wisdom. Full reflection means it is again a reflection, not the source. Source is Parabrahma. Parabrahma is reflected in the moon, or sun is reflected in the moon as we see. So in the same way, Buddha is that consciousness which is awake and enlightened, fully reflected all the divine qualities of the monad, Atma Buddhi Manasa. So such person is called Tathagata also. He himself called Tathagata. You know, his surname is Gautam, but his name is Siddhartha. But he himself was called as Tathagata. What is this Tathagata? See, Tatha means in the same way, and Gata means gone. Means he lived the life according to his teaching. Then what is that teaching? Teaching is, as it is nicely explained, eightfold path, and all the four truths and the 10 fetters. He all overcome these, and he became the completely involved, and he has gone to Nirvana. Then he gone to Nirvana means he went to the subtler planes, and he appears on the Vaisak full moon day on the Akasha, as it is said in this celebration of the Vaisak full moon. This is true, in fact. So anyway, what we have to remember is, Buddha said one thing: our wrong actions, by our wrong actions, we bring sorrow to ourselves. But by our not doing any wrong action, we purify ourselves. This is a very simple statement he did. By our wrong actions, we bring suffering to ourselves, and we get relief from the suffering, not doing wrong action. This is very simple formula he gave. So out of ignorance, we all are attached to this impermanent world with Maya, out of ignorance. And out of ignorance we are attached, and out of attachment, the process of becoming begins. And this becoming process, we want to become something. Our ambitions, our desires won't end. And therefore it gives rise to the rebirth. We're caught in that cycle. Thus we are caught in our own habit of reacting. Reacting means doing wrong action. It is not, action is right action, but reaction is wrong action. Thus we are caught in our own habit of reacting out of ignorance. So this is what
he taught the eightfold path. He went to Nirvana means he Tathagata, he became the Tathagata by following these. This is what he explained very nicely in all the three languages. The same I am enjoying. Thank you very much. I am not giving you much, but this Vaisak is very interesting to listen to Buddha's teaching at least. Whether we follow it or not, that is different, but we have to enjoy this kind of exposition of the knowledge. Thank you very much, all the three speakers, and also TARAL ji and Archana ji, to everyone inviting me for this. Thank you. Thank you. Thank you, Shinde sir. Thank you, sir. Thank you, Shinde ji. Thank you, everyone. और I think अतुल जी समापन की ओर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सुषमा जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। सुनते सुनते एक बात मन में आया कि सबसे पहले यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट गौतम बुद्ध ने दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री में सभी जाति वर्ग के लोगों को प्रवेश दिया और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, जो विचारधारा थी। क्योंकि जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी धार्मिक आडंबर थे, उसको दूर सबसे पहले गौतम बुद्ध ने किया। और तीसरी बात तो बहुत कहने की है, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, जो अष्टांगिक मार्ग था, उसमें जो थियोसॉफी के 3 आयाम है, जो हमारा लोअर ट्रायड है, क्वाटरनरी वो है, और अपर ट्रायड है। तो जो 8 मार्ग हैं, उसमें जो फिजिकल एक्शन की बात कही गई है, जिसमें सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका है। इसके अलावा जो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है, वो चित्त वृत्तियों का निरोध है। उसके अलावा सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है, वो मानसिक और बौद्धिक प्यूरिफिकेशन है। तो यदि हम इन अष्टांगिक मार्गों का जीवन में पालन करेंगे, तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी, हमारा लोअर मेंटल, हमारा हायर मेंटल का विकास होगा, अंतः प्रज्ञा का विकास होगा, तब हम निर्वाण के पथ के योग्य होंगे। जैसा कि अभी शिंदे साहब ने कहा कि तथागत तब हम होंगे जबकि हम इन अष्टांगिक मार्गों का, यानी शील, समाधि और प्रज्ञा के पथ पे चलेंगे, इन अष्टांगिक मार्गों के द्वारा, तब हम जो है वो बोधिसत्व बनेंगे और तथागत की श्रेणी में आएंगे। बहुत कुछ कहने को है, बहुत सुंदर प्रस्तुति की, और बौद्ध धर्म सबसे कम समझा गया है, ये बात भी सत्य है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो मौन हो गए और उन्होंने कहा कि मैं किसी के प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा अप दीपो भव, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो अदर्स, फॉलो योरसेल्फ। क्या बात। तो बस इन्हीं शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल भाई समापन की ओर चलते हैं। अर्चना जी। અર્ચનાબેન શિવનનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो,
मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. खूप खूप धन्यवाद. Sir, you are muted, sir. All of you, thanks to all of you and especially दिनाकरण जी, आपने बहुत सचमुच में बहुत अच्छा लिखा, इससे दोनों स्पीकर्स को बहुत आसानी से वो हुई.